Okay, so beta for AS, you prepared two papers. Paper one, which was MCQs paper, which was based on MCQs. The subject code for chemistry is 9701, and the other paper was paper two, which was theory paper. And paper three was practical, लेकिन उसकी exemption was there, so you availed exemption. So hopefully paper three is not there for in October, November. So you will appear for paper one and paper two in October, November. और बेटा फिर then A2 में you have to prepare two papers, okay? Paper 4. Now paper 4 is theory paper, right? A kind of technical paper, थोड़ा technical paper है. इसमें काफी depth में questions पूछे जाएंगे. So you need to know the subject and syllabus to attempt paper 4. काफी एनालिसिस और टेक्निकल किस्म का पेपर है ये पेपर 4. तो इसके लिए सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है. Now this paper 4 will be of 100 marks. 100 marks का पेपर है ये, और its time is 2 hours. Right? अच्छा. Now weightage for this paper is 38.5%. Right? Your 50% will be taken here. जो आपका ग्रेड बनेगा उसकी वेटेज जो है वो 50% will be taken from AS and 50% will be from A2. So in this way your grade will be made. अच्छा, A2 का जो 50% है उसमें 38.5% will be from paper 4. And then बेटा paper 5 होगा. Paper 5 is planning and design. Planning and design, it's not a difficult paper. Planning and design, आप लोगों ने ATP कुछ ध्यान में है? ओ लेवल में एक पेपर होता था ATP, उसकी थोड़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म है ये पेपर 5. तो इसमें आपको डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स वो देंगे और फिर गाइडेड क्वेश्चंस होंगे. सो यू विल गो अकॉर्डिंगली. तो अगेन इसके लिए जो पेपर 4 का सिलेबस होगा, दैट सिलेबस will be used to attempt paper 5. So weightage for paper 5 is it's 11.5. Yes, it's 11.5. So this very paper is very important, okay? Paper 4 जो आपके ग्रेड को डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा रोल है. ऑब्वियसली पेपर 1 और पेपर 2 का भी बहुत बड़ा रोल होगा आपके ग्रेड्स को डिसाइड करने के लिए. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पेपर्स? यस, ये जो बेटा पेपर 5 है, इट इज 1 hour and 15 minutes टाइम होगा इसका. 1 hour 15 minutes टाइम, और इसके 30 मार्क्स होंगे. इट इज 30 मार्क्स पेपर. यूजुअली इस पेपर में 2 क्वेश्चंस होते हैं. पेपर 5 will be 2 questions only, जो कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स से यूजुअली रिलेटेड होते हैं. यस, एनी क्वेश्चन? तो बेसिकली इस वक्त स्क्रीन पे जो पेपर्स हैं, यू हैव टू अपीयर इन दीज पेपर्स. ये सारे पेपर्स पेंडिंग हैं. ओके, एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न्ड, सो इन सिलेबस बेटा वी विल बिगिन विद केमिकल energetics. Okay, chemical energetics. So you have studied some part of chemical energetics in AS, और फिर A2 में is the continuation of that energetics. जो आपने पढ़ा है chemical energetics का AS में, उसकी continuation होगी यहाँ A2 में. वैसे क्या पढ़ा था AS में in chemical energetics? Yes, what we studied in chemical energetics in AS? Standard enthalpy changes. Yes, mainly we focused the calculations for enthalpy change of reactions. Enthalpy change of reactions and the different methods से calculate की थी. वो सारे data और सारी knowledge required है A2 के लिए भी. तो बेटा for A2 यानी कि paper 4 के लिए you need all the concepts of AS from chemical energetics. ठीक है? AS के सारे concepts आपको चाहिए chemical energetics से, and then A2 के concepts भी आप study करोगे for paper 4. So chemical energetics के बाद बेटा we will discuss group 2. Yes, beta, you know what you studied in group 2 in AS? Properties and reactions of group 2 elements. ठीक है. So can you tell me the trend of solubility trend of group 2 sulfates?
ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी ट्रेंड क्या था? What happens to solubility of group 2 sulfates down the group? Increases according to Moyes. Group 2 sulfates are like this, na? Beryllium sulfate, and then magnesium sulfate, and then calcium sulfate, and then strontium sulfate, and then barium sulfate. क्या ट्रेंड है बेटा? जी बेटा, नो रिस्पॉन्स. आशिम बेटा, क्या व्हाट यू से? Or there was another trend as well: beryllium oxide, and magnesium oxide, calcium oxide, strontium oxide, and barium oxide. तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स का ट्रेंड एक जैसा था. इनका क्या ट्रेंड है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, strontium hydroxide, or barium hydroxide. So I'm talking about solubility trend. Yes. The solubility of hydroxides and oxides increases down the group. Oxides and hydroxide की solubility increases down the group. Yes, yes, you are right. और sulfates की decreases according to Duresh Avar and Misbah Rahman. Yes. अब मुझे precisely बताओ, what about beryllium sulfate? Beryllium sulfate is soluble, right? And magnesium sulfate भी soluble है, right? And calcium sulfate is partly soluble, otherwise insoluble, okay? Partly soluble. Or you can say insoluble. दोनों तरह ठीक है. And then this is insoluble and insoluble. So precisely आपको ये AS study से ये याद होना चाहिए बेटा. You need to know this thing for your AS exam, for A2 as well. And what about hydroxide and oxides? They are insoluble. Magnesium oxide, hydroxide, they are also insoluble. फिर calcium वाले soluble हैं, strontium वाले very soluble हैं, फिर ये भी very very soluble हैं. So you can see कि इधर solubility is increasing, sulfates में solubility is decreasing down the group, right? Now in A2 we will discuss the reasons of this solubility variation. ऐसा क्यों है, sulfates में solubility क्यों decrease हो रही है और oxide hydroxide में क्यों increase हो रही है? तो the reason will be discussed in A2, right? बेटा ये हम थोड़ा आज तो चूंकि फर्स्ट क्लास है, कल से हम क्लास सारी ये डिस्कशन बेस्ड रखेंगे. आपको बोलना पड़ेगा और अपने माइक बेटा ठीक करवा लें, राइट? ऑनलाइन क्लासेस तभी इफेक्टिव होंगी जब मैं क्वेश्चन करूं और आप आंसर दो मुझे. तो आज तो चलो ठीक है, कल से प्लीज आप मेक श्योर कि आपके माइक वर्किंग कंडीशन में हो. सो वी विल बिगिन विद केमिकल एनर्जेटिक्स एंड देन ग्रुप 2. बेटा थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए. देन बेटा फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज केमिकल इक्विलिब्रिया. केमिकल इक्विलिब्रिया. नाउ यू नो इक्विलिब्रिया फ्रॉम AS. इमामा बेटा, हाउ वुड वी डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम? हाउ टू डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम? इमामा बेटा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ. Sir, when there is a equilibrium between reactants and products, when the rate of forward reaction is equal to rate of forward reaction is equal to rate the of rate of backward reaction. ठीक है? When the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, and concentration of reactant and product become constant. At equilibrium, concentration of reactants and products become constant. अच्छा बेटा, अगर if this is the equation, right? H2 wait, if it is like this, HCl gas plus ammonia gas, and it goes to ammonium chloride solid. So how would you write Kc expression and how to write Kp expression? इस इक्वेशन के लिए how to write Kc expression? We go for products divided by reactants.
तो प्रोडक्ट आर सॉलिड तो हम उसको नहीं लिखेंगे, और हम रिएक्टेंट्स केसी में इन दोनों को लिखेंगे, और केपी में भी गैसेस को हम लिखेंगे। तो वो हाँ, और तो उनकी यूनिट्स बताना। नहीं, यूनिट एक्सप्रेशन बस मैं अब सिर्फ एक्सप्रेशन क्या आप लोगों के जहन में आ जाए कि हम क्या पढ़ना चाहेंगे इस टॉपिक में। तो केसी एक्सप्रेशन में वी नीड टू राइट प्रोडक्ट्स हियर, तो लेकिन प्रोडक्ट इज सॉलिड, तो केसी में वी आर नॉट सपोज टू राइट सॉलिड। तो सिंस प्रोडक्ट इज सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड इज सॉलिड, तो सॉलिड को नहीं करना मेंशन। और फिर डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन शो करनी है, राइट। आई होप बेटा यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट। यू नो व्हाट दिस स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स? जी, concentration. square bracket is concentration in mole per dm cube. Okay. अच्छा. So Aisha Alim beta, how to write this Kp expression? कोई idea है Aisha beta? How to write Kp expression? जी beta, we can't hear you. जी नवाल बेटा, आप बताओ. नवाल बेटा. Okay. अबीर बेटा. Yes, sir. जी नवाल बेटा बताएं. How to write this Kp expression? अच्छा, it's okay. जी हादिया बेटा. इसी तरह लिखेंगे जैसे केसी लिखा है, लेकिन यूनिट्स हम प्रेशर नहीं, लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे. You want to say? जी मोइज बेटा, any comments? Moiz and Hashim. Brackets दूसरी Sir, नहीं brackets change. Brackets कौन सी? Small brackets. सर वो इसके बीच में से brackets जोड़ने के लिए होती है। जी मिसबा रहमान, what you say about KP expression? बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़े ना, आप लोगों से भूला हुआ है सारा चीजें जो थी, ये तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो जो नोट्स हैं वो नोट्स उनको रिवाइज करें, पहले मेक श्योर करें आपके पास नोट्स हैं भी कि नहीं बेटा। हाँ, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये बेटा किस 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 बच्चे ने लिखा पार्शियल प्रेशर? निमरा बेटा आपने लिखा? हाँ, गुड गुड बेटा निमरा। इधर पार्शियल प्रेशर होना चाहिए बेटा। You should write it like this: P partial pressure of HCl into partial pressure of ammonia. ऐसे लिखना चाहिए, नहीं? यही तो फर्क है। Kp में हम partial pressure यूज करते हैं। P is for partial pressure. Now what is partial pressure? क्या होता है जी partial pressure? partial pressure का क्या मतलब है? Exerted by one individual gas in a mixture of gases. हाँ, मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस का प्रेशर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस का प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर। जैसे एयर है, तो एयर में बहुत सी गैसेस हैं, तो किसी एक गैस का प्रेशर एयर में विल बी पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये आपको पता है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड क्या है? व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड? व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस? एक बढ़ा दिया, अभी आप नहीं बताएं, ठीक है। बाकी बच्चे भी इंटरेक्शन में, दे शुड टेक पार्ट। यस दुरेश अवार बेटा, व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड बेस? Acid is proton donor. प्रोटॉन डोनर इज एसिड। हाँ ठीक है मरियम बेटा, आपने भी ठीक कहा। एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके, तो अगर इफ आई राइट दिस इक्वेशन H2, इसमें बेटा आप डिसाइड करके मुझे बताओ कि विच इज ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड विच वन इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। इट गोज लाइक दिस। यस, अब जिससे मैं पूछूं बेटा, हादी आप एंड में बताना, ठीक है। यस बेटा, बाकी बच्चों के लिए ओपन है ये। Which one is Bronsted Lowry acid and which one is Bronsted Lowry base in this equation? H2PO4 is acid. This one is acid. So how you came to know कि ये acid है? It loses. It loses one hydrogen because अगर हम इसको compare करें ना, you have two hydrogen on left hand side for this, but you have one hydrogen over here on the right. तो one H is missing. इमामा बेटा समझ आ रही है?
Yes, sir. So one hydrogen is missing. It means that this one is the donor, and donor is acid. And this sulfate को अगर देखें, sulfate को compare करें hydrogen sulfate से, तो here on the left you have 0 hydrogen, on the right you have 1 hydrogen. So it means sulfate is proton acceptor. Acceptor का मतलब है this is base. So base is acceptor. अच्छा, right? Okay. So ये इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है और ये क्या है? जी बेटा, जी हादी आप बताएं. What is HS? Conjugate acyl. हाँ, इसमें कौन सा conjugate? इसमें से HSO4 conjugate base है. देखो, base will produce conjugate acid, right? Sorry. हाँ, it's okay, कोई बात नहीं. और फिर acid will produce conjugate base. Base will produce conjugate acid, and acid will produce conjugate base. चलो, ये तो हम हल्का फुल्का टच कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स को. सो केमिकल इक्विलिब्रिया, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे A2 में. ऑब्वियसली मैं ये रिवाइज करा के फिर A2 के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा. देन केमिकल काइनेटिक्स. Chemical kinetics. Beta, you remember Boltzmann distribution curve? Yes, sir. And collision theory. Beta, आपको पता है collision theory के क्या थे main points? What were the main points of collision theory? What collision theory says? जी हाशिम बेटा, आप बताओगे कुछ about collision theory? तो जो alignments होनी चाहिए and they must have energy evacuation equal to or above. हाँ, शाबाश. Molecules have energy. The energy of molecule should be equal or greater than activation energy, right? And reactant molecules must collide to give product. Molecules must collide to give product, and they must collide with correct orientation. ये तीन बातें थी. पहला पॉइंट कि molecule must collide, दूसरा collision with correct orientation, और तीसरा the energy of molecule should be equal or greater than activation energy, right? So yes, और फिर उसके बाद अब इसमें काफी डिटेल है A2 में केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि हम टेक ऑन करेंगे. So then बेटा we will discuss transition elements. Transition elements per detail, the whole topic is about transition elements, so a detailed discussion is there. And then beta electrochemistry. So last time you studied electrochemistry in O levels. There was no electrochemistry in AS, लेकिन in A2 electrochemistry is there, और काफी डिटेल में है. One of the technical topic of this A2 chemistry is electrochemistry. ठीक है बेटा, तो usually in 7 topics के बाद आपका mid year exam होगा, right? So midterm exam will be conducted in these 7 topics. And then beta, the 8th topic is organic chemistry. Or organic chemistry is actually based on one of the area is benzene and derivatives. Derivatives का मतलब है compound which are produced from benzene. So benzene and derivatives will be studied inshallah. Derivatives. Or beta, then carboxylic and derivatives. Carboxylic and derivatives. And beta, the third thing is organic compounds containing nitrogen. Okay, so organic nitrogen compounds. Organic nitrogen compounds like nitriles, like amines. These will be studied. So ये 3 topics हैं. A2 की organic chemistry short है, इतनी long नहीं है जितनी AS में थी. लेकिन बेटा, for A2 paper, you have to prepare organic chemistry of AS as well with this A2 organic chemistry. ये जरा गौर से सुने बात. अगर आपने पेपर 4 अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री AS वाली भी सारी कमांड करनी है A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ. अदरवाइज A2 में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, राइट? A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा, अभी जो ये A2 का पेपर था बेटा, अभी ये मई में हुआ था, 4 मई को A2 का पेपर था. आपको मैं बताऊं कि 4 क्वेश्चंस थे ऑर्गेनिक से. अभी ये 4 मई को जो पेपर गुजरा A2 का, उसमें 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे और टोटल 8 क्वेश्चंस थे पेपर में. तो मतलब 50% पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था. जो बच्चे मुझे फीडबैक दे रहे थे उससे मैंने ये कंक्लूड किया कि 50% पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था. तो A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए
आपको एएस भी सारी आनी चाहिए, एएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, वरना A2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अच्छा बेटा, उसके बाद वी विल डिस्कस द 9th thing is polymers, and beta the 10th thing is analytical techniques. Analytical techniques. तो बेटा एनालिटिकल टेक्निक्स, जो टेक्निक्स आपने एएस में जो टेक्निक पढ़ी है दैट वाज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इन A2 we will discuss mass spectroscopy and then NMR and electrophoresis and beta chromatography. ये टेक्निक्स हैं। एंड देन 11th इज ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो बेटा नोटिस करें कि ये सिलेबस भी अच्छा खासा है, आप देखें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं A2 में। तो जस्ट मेक योर माइंड कि आपने डेली काम करना है, तब आप ग्रिप कर सकोगे सारे सिलेबस को। और सिलेबस को ग्रिप करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके एंट्री टेस्ट होंगे, वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग, यू हैव टू गो थ्रू द एंट्री टेस्ट वाली जो स्कीम है। तो फॉर एंट्री टेस्ट यू नीड टू हैव गुड ग्रिप ऑन सिलेबस। तो ना सिर्फ आपने ग्रेड लेना बल्कि एंट्री टेस्ट के लिए भी आपने सिलेबस को ग्रिप करना। एनी क्वेश्चन हियर? No, sir. No question. Okay, so I think we should, the topic of discussion today is chemical energetics. Okay, so topic is chemical energetics. Okay, acha beta, now you know that how to define what is this beta, how to read this one? Standard enthalpy change of formation. So how to define this one? The standard enthalpy change of formation. Yes, what it is? Energy change when one mole compound is formed from its products in standard state. Energy change when one mole compound is formed. One mole product is formed from its compounds in standard physical state and under standard condition. हाँ ठीक है, इसमें बस मेजॉरिटी डेफिनेशन आपकी ठीक है, इससे थोड़ा सा इशू है बेटा। अब सपोज अगर हमें कहा जाए कि ये लिखें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी इक्वेशन लिखें। सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? तो यू शुड मेक श्योर कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो, ठीक है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो अपने एलिमेंट्स से फॉर्म हो। तो यू नीड टू राइट एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। So one of the element is carbon and the other element is oxygen. So element should be there on left hand side. And the other thing is that element should be in their standard physical states. So standard state of carbon is solid, standard state of oxygen is gas, or equation balanced view. ठीक है। So that is why how would we define it? We will define it energy change when 1 mole compound, जी 1 mole compound is formed. अब क्या लिखना चाहिए आगे? Formed from its elements. फिर आगे, और एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। हाँ, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। और ये सारा प्रोसेस होना चाहिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा यू नो व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? 1 atmospheric pressure. शाबाश, 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature, ठीक है। 298 Kelvin temperature या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atmospheric pressure and beta 1 mole per dm cube concentration. These are standard conditions. Okay, these are standard conditions, right? अच्छा, ये मुझे बताओ कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, will it be exothermic or endothermic? दोनों हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यस, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कैन बी एंडो और कैन बी एक्सो। तो बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, राइट? अच्छा, now बेटा, now compare
the concept with the new concept. बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है enthalpy change of formation में? Any question in this enthalpy change of formation thing? You should ask. इमामा बेटा आपको कोई क्वेश्चन, आपको एनर्जेटिक्स में मसला था, वो सारा रिवाइज होगा एएस की एनर्जेटिक्स। Okay, sir. A2 और एएस की पैरेलल में चलती रहेंगी इस चैप्टर में। ये टॉपिक मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका एएस एनर्जेटिक्स भी में कमांड आपकी ज्यादा होगी और A2 के कॉन्सेप्ट भी आते जाएंगे। अच्छा बेटा, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ A2 इज लैटिस एंथैल्पी, राइट? लैटिस एंथैल्पी। अच्छा, दिस लैटिस एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड विद दिस साइन, इसको L and E. This L is for lattice and E is for enthalpy, right? अच्छा, now what is lattice enthalpy? इसको define करने के लिए no need to memorize lattice enthalpy. Just try to understand the concept. तो concept ये है कि suppose lattice enthalpy of sodium chloride, right? Sodium chloride. Remember this thing that ये lattice enthalpy का concept is for ionic compounds, not for covalent compounds. For ionic compounds, क्योंकि जो ionic compounds हैं, they exist as lattice. Covalent compound do not make lattice. और ये जो lattice हम पढ़ रहे हैं ना, ये ionic lattice है. Basically, ये lattice enthalpy is actually ionic lattice enthalpy है. तो this concept will be for ionic compounds. तो आप देखो ये sodium chloride मैंने लिखा है bottom पे. तो इसकी lattice enthalpy की equation is like this: NaCl solid, and I am bound to take gaseous ions. I am bound to take gaseous ions, यानी ये sodium ion in gaseous state. इसी तरह chloride ion in gaseous state. ठीक है? तो अब इन gaseous ion से अगर ये 1 mole ionic compound बनेगा, तो the energy change will be known as lattice enthalpy. समझ आई? अगर gaseous ion से 1 mole ionic compound form हो, तो then the energy change will be known as lattice enthalpy. And lattice enthalpy is exothermic. It is always exothermic. क्यों बेटा, क्यों exothermic होगी? Lattice enthalpy will be exothermic. Why? बॉन्ड बन रही है। हाँ, there's no bond breaking on left hand side. No bond breaking. क्योंकि you have gaseous ions. So no bond breaking on left hand side. But there is bond is being made on the right hand side. Bond making is happening, but there is no bond breaking. तो आपको पता ना, bond breaking is endothermic and bond making is exothermic. So how to define? We will say that energy release when 1 mole ionic compound, 1 mole. अब देखिए नीचे जो इक्वेशन है उससे खुद आप डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करें. So you will say that energy release when 1 mole ionic compound is formed from its gaseous ions. Formed from its gaseous ions. Right? This energy release will be known as lattice enthalpy या lattice energy. Any question or confusion? Achha, suppose if we have to construct equation for magnesium oxide, lattice enthalpy equation for magnesium oxide, तो कैसे बेटा हम कंस्ट्रक्ट करें? How to write equation for lattice energy of magnesium oxide? I should take 1 mole magnesium oxide on the right hand side, and I should take gaseous ions on the left hand side. So magnesium ion is di-positive, it should be gaseous, and oxide ion is di-negative, and it should be gaseous. So आपने left side पे gaseous ions लेने हैं to make equation for lattice energy. ठीक है बेटा? Yes, मरियम बेटा, ये previous slide आपने कहा, and this is the previous slide. ये स्लाइड्स में शेयर करूंगा क्लास के एंड. ठीक है? अच्छा, अब अगर हमें ये कहा जाए लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. यस, सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन? जी बताएं बेटा. What should I write on? Yes.
जी बेटा, how to construct this equation? Aluminum oxide right side. Aluminum oxide और 1 मोल लेना चाहिए on the right hand side. Yes, so left पे क्या लें? जी बेटा, left पे क्या लें? Left पे you should take aluminum ion which is tri positive और balance करने के लिए you should place 2. क्योंकि आपने एल्यूमिनियम को बैलेंस भी करना है. The ion should be in gaseous state. Ion should be in gaseous state, ठीक है? And then oxide ion और बैलेंस करने के लिए you should place 3 here. And ion should be in gaseous state. Right? ठीक है? अब बेटा मुझे yes, any confusion here? No, sir. अच्छा, ये मुझे बताएं कि how these two equations are different. This is NaCl solid. This is NaCl solid. So you know right hand side is same. और left hand side पे I am taking half chlorine. और इधर हम left hand side पे I'm taking like this. So how these two equations are different? इनकी क्या लेवल होना चाहिए इसको? ये enthalpy change of what? And this is enthalpy change of what? ऊपर वाला फॉर्मेशन है और नीचे वाला, हाँ, ऊपर वाला precisely formation of NaCl है, right? और नीचे वाला lattice enthalpy. हाँ, lattice enthalpy of NaCl है. शाबाश, very good. नीचे वाला lattice enthalpy है और ऊपर वाला formation. अब बताओ जो एनर्जी चेंजेस हैं, जो ऊपर वाला है formation, it can be exo, can be endo, right? लेकिन lattice enthalpy is always exothermic, हमेशा. ठीक है? अच्छा, ऊपर वाला बेटा बताओ कि वो एक्सो एंडो दोनों क्यों पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि देखो आपने बॉन्ड ब्रेक करना है ऊपर वाली इक्वेशन में. क्लोरीन में बॉन्ड है, उसे ब्रेक करना है. इस तरह सोडियम में मेटालिक लैटिस है, उसे ब्रेक करना है. और राइट साइड पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है. तो अब हमें नहीं पता कि बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज्यादा यूज होगी या बॉन्ड मेकिंग में. दैट इज वाई दोनों पॉसिबिलिटीज हैं एक्सो एंडो. लेकिन नीचे वाली इक्वेशन में देखें, देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड ब्रेकिंग. सिर्फ only bond making is involved. Only bond making is involved, and bond making is exothermic.